our story. This week we're taking a look at the Supreme Court judgment that has banned triple talaq. We're going to first begin with the case study of someone who's actually suffered triple talaq via SMS, and how she lived through that ordeal. And after that we're going to open a panel discussion and actually examine what this judgment means. 2010 में शादी हुई थी, अरेंज मैरिज थी. जिस तरह से एक अरेंजमेंट किया जाता है दोनों फैमिलीज़ की तरफ से, सब कुछ अच्छा लग रहा था. हस्बैंड भी अच्छी पोजीशन पे काम करते थे, पर शायद किसी के एजुकेटेड होने से उसका अच्छे होने में फ़र्क होता है. ये सारी चीज़ें मुझे बाद में समझ में आई. सब कुछ अच्छा लग रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी जो मीन्स करनी थी कि अच्छा चल रहा है, लेकिन सडनली चीज़ें ना सामने आने लगी. लाइक मेरी जो ससुर थे उनकी भी 3 शादियां हो चुकी थी, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता थी, मुझे शादी के बाद पता चली. तो एक बैकग्राउंड उनका शायद उसी तरह का था कि उनकी फैमिली में शायद सभी कहते हैं ना कि किसी फैमिली में अगर सब लोग अच्छे हैं तो वो एक गलत को रोक देते हैं, लेकिन सब लोग ही अगर इस तरह के होंगे तो फिर कोई किसी को कैसे रोकेगा. लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. अगर मेरे हस्बैंड सब कुछ ठीक चल रहा था, पर सडनली मैं काफ़ी बीमार पड़ गई. मैं अपने घर पर आगे सिर्फ 1 ही महीना मैं अपने हस्बैंड के साथ रही थी. घर पर आगे कंटिन्यू वही सब चलता रहा कि अभी नहीं लेकर जाना है, अभी नहीं लेकर जाना है. उसके बाद फाइनली एक टाइम ऐसा आया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मुझे कुछ तुमसे कहना है, और 3 बार तलाक दिया मुझे. और फ़ोन पर ही उन्होंने तलाक दिया था, वो आए नहीं थे घर पर कि हाँ एक माहौल, एक तरह से एक गैदरिंग की जाती, एक अरेंज, जिस तरह से शादी को अरेंज किया गया था, ऐसा कोई तलाक में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं डाला. बस उन्होंने 3 बार तलाक दिया और वो अपनी तरफ से फ्री हो गए, और उसके साथ जितने भी प्रॉब्लम्स आनी थी वो सब मेरे साथ आई. जिस फैमिली में मैं गई थी वो भी मुस्लिम्स थे, और जिस फैमिली में मैं हूँ वो भी मुस्लिम्स हैं. और जो एक परसेप्शन बनी हुई है ना मुस्लिम या तलाक को लेकर, वो उस तरफ भी थी और इस तरफ भी थी. जब मैंने भैया को बोला अपनी फैमिली में कि उन्होंने मुझे फ़ोन पर तलाक दे दिया, तो उनका रिएक्शन उस चीज़ को डिनाई करना नहीं था, बल्कि उसको एक्सेप्टेंस मिल चुकी थी कि ऐसा तो हो जाता है. 2-4 मौलानाओं को फ़ोन किया भैया ने कि भाई ऐसा हो जाता है क्या, तो उन्होंने ये भी नहीं जानना चाहा कि ऐसी क्या बात हो गई जो उन्होंने मतलब आपको तलाक दे दिया. बस उन्होंने कहा हो गया है, अब आपकी बहन का तलाक हो गया है. उसके बाद कंप्लेंट्स की हुई हैं. उन लोगों ने कंप्लेंट की थी पुलिस स्टेशन में जाके कि हम लोगों को परेशान किया जा रहा है. एक तो तलाक भी दिया है और ऊपर से पुलिस कंप्लेंट भी किया है. पुलिस कंप्लेंट को मुझे किसी तरह से फेस करना था, क्योंकि मेरी फैमिली है वो पूरी तरह से मुझ पर बरस पड़ी है कि तेरी वजह से ये सब हम देख रहे हैं. 7-7 घंटे 10-10 घंटे पुलिस स्टेशन में बैठे रहना. आपको पता ही है कि दिल्ली पुलिस कैसी है. सब कुछ मतलब इतनी देर तक वो सारी परेशानियां एक अकेली लड़की झेल रही है, और उसको मदद करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है. तलाक लेना या देना गुनाह नहीं है, लेकिन तलाक देने का तरीका गलत है. बस एक बार कभी मैसेज के थ्रू, कभी फ़ोन के थ्रू, कभी आप मीन्स बहुत अलग तरीके चुन लिए हैं लोगों ने. कभी तो फेसबुक पे भी दे देते हैं, कभी तो वॉइस मेल कर देते हैं कि आप 3 बार तलाक बोल दिया, चलिए आपका तलाक हो गया. Well, we just heard Isma's story and what life was before the Supreme Court banned this instant talaq or triple talaq as it's called. And now to discuss the ramifications of the court's judgment, I have with me a panel of experts. We have Javed Ansari. He's a senior journalist and a political and social commentator, a very familiar face on television cameras. And of course, Dr. Soumya Saxena. She's a Cambridge scholar and an expert on family law. And Maulana Saeed Athar Hussain Delvi. Welcome everybody. And Javed, I'll begin with you. Can you put this into context? Because this fight has been going on for a long time. People are saying it's a landmark judgment. Muslim women are finally free. How would you react to comments like that? I fully agree. I'm happy that this has been confined to the dustbin of history. It should have been done a million years ago. It couldn't have come a moment too soon. It is a small, and I deliberately use this word, a small but significant step. This will empower, embolden, provide tremendous amount of confidence to women, to Muslim women in particular, and women across religions in general. Muslim women have been at the receiving end of this patriarchal, these laws that we men, especially the clergy, have the way we've interpreted these laws
And perhaps now, even at this late stage, I hope sense will dawn on people who are opposing this, because this is not meant against anybody. This is in favor of people from within the Muslim community, and therefore those Muslim men who still, even now, are opposing this or see this as an encroachment of their rights or an encroachment into their religious beliefs are barking up the wrong tree. Nelvi ji, he's saying that those people who say abhi bhi encroachment are barking up the wrong tree. Mahmood Madani ne abhi kaha tha ki, I will not listen to this judgment. What is your reaction? मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला इसमें पर्सनल लॉज को प्रोनाउंस किया गया है। एक तरफ जहाँ हम ये समझते हैं कि जो हमारा सेकुलर फैब्रिकेशन था, ये जो हमारा दस्तूर था, कहीं आइन को भी बचा लिया गया, और जो जावेद भाई ने कहा कि जो असल हुकूक थे औरतों के, जो अभी तक जिनको पामाल किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं उस तरफ एक कदम आगे बढ़ाया है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदू खवातीन को, उन औरतों को 2005 में इख्तियार मिला कि वो बाप की जायदाद में हिस्सेदार हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम पहले दिन से उनको हक दे रहा है। कुरान में कहा गया कि वो हर हिस्से में हिस्सेदार हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि पर्सनल लॉ को बजाय इसके कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सियासत का रंग दे दें, अब हमको औरतों को जो हुकूक कुरान और सुन्नत ने दिए थे, जैसे मिरास में उनका हिस्सा था, महर का हिस्सा था, उनको तलाक तफीज़ देने का हक था, खुला का, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं हमको अब समाज में, अपने समाज में भी और इस समाज की रोशनी में और औरतों के लिए जो हुकूक है उसके लिए आगे की लड़ाई, ये समझता हूँ जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मौलाना साहब is talking, I think, about कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में जब कहेंगे, so let's take the positive of other religions also. Everything negative is not there in the Muslim religion. There are positives, like he's saying the concept of meher. There are negatives in the Hindu religion. So you see this step towards a uniform civil code. Before I answer that, I just want to express my joy over the fact that at least there is somewhat of a consensus on the fact that we actually think this is a good judgment. Now, one thing that we should really own up to is that this is a Muslim women's movement's sort of, result, and we can't take this credit away from them. We cannot under any circumstance let any political party appropriate it or let anybody even, within the community oppose it, because this was a Muslim women's fight. It was a fight within community and they have won it. Now, whether or not this is a step towards uniform civil code, I would be, I would actually concur with this point that in all religions, this is the moment to acknowledge that there are infirmities in Christian personal law. For instance, Christian women take much longer than women of any other community to get a simple divorce filed. For Hindu women, we've been struggling to try and get rid of restitution of conjugal rights. We are looking to introduce things like irretrievable breakdown of marriages, which actually makes down the procedure of marriage simple. And through Islamic law, I feel that in a lot of ways, we are looking at a simpler procedure now. Whatever the infirmity was can be done away with a court order in a judgment, and even the minority judgment, I would like to draw your attention to. The minority judgment actually opens the door for legislative intervention. The moment we say that the legislature can intervene, true, there needs to be a consensus, but that consensus doesn't need to be about a uniform civil code. The consensus can simply be about family law reform, where we look at specific religious practices of different religions and we go on addressing them one issue at a time. Javed, to take off from what she's saying, there are other, retrograde steps in other communities also, other religions also. So, Uniform Civil Code says we will try and involve everybody, but jo customs hai, unhe customs rehne do. This is what they are saying. Look, jo customs hai, this is an argument, this is something that can be used both ways, And then, purely by way of example, the Muslims will say, this is a custom dear to us, so let it continue. You have to apply. Uniform Civil Code will only be a success, like Soumya was saying. First of all, you have to remove politics from it. It's not very easy, but you need to remove. You can't, and it's a very significant intervention which she made. This is, no political party or government can claim credit for this. The easiest thing in the world is to pat yourself on the back and claim credit for somebody else's work. If credit is due, it goes to those Muslim women who have fought this battle, so hats off to them. Even as far as Civil Code is concerned, we all know that the BJP has been asking for this for the longest possible time. I am willing to stick my neck out and say that this is not out of concern for the plight of women, but for their own political reasons. So the BJP and all such political parties who want to politicize this will need to put their political interests aside. And then you need to be able to sit down and talk. Like there are good provisions in every religion. Look at meher. Meher is something that you need to pay to the bride
essentially before the marriage or during the course of the marriage. Now this is something which I feel which other religions should incorporate. There are issues like khap panchayat, there are retrogressive, demonic practices that take place in the countryside, and this cuts across religions. Now whether this impacts Hindus or Christians or Jains or Muslims or Sikhs, these have to be done away with, and the government must show the same kind of enterprise and the same kind of eagerness and energy that they showed in this case. As far as the BJP is concerned, look at the first affidavit that they gave in this case. What was it? It was a very namby-pamby one. The one that the UPA used to give. That okay, we will talk to all stakeholders and do it. It was only after the Supreme Court chided them saying this is at variance with your stated position that they came up with the second one. So therefore, no political parties are above them. They should stay out of the fray and allow the courts and allow social groups to try to evolve a consensus and absorb the best. Maulana, ये जो absorb the best की जो बात चल रही है, triple talaq को क्यों अभी तक people are saying that it's our custom and we will. मैंने जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया वहाँ उसको तलाक़ बिदअती कहा, जो इस्लामिक जो लफ्ज़ थे उसी को उन्होंने इस्तेमाल किया. लेकिन जो सोमिया और जावेद भाई ने जो बात कही, देखिए इसमें दो चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा. जैसा कि सोमिया और जावेद भाई ने कहा, असल चीज़ ये है कि इसमें सियासत से ऊपर उठ के सोचने वाली बात है कि अगर औरतों को इससे फ़ायदा पहुँच रहा है, वो किसी भी समाज की, औरतों को नहीं, जिस भी आदमी के हक़ को पामाल किया जा रहा है, अगर उसको फ़ायदा पहुँचता है तो हमको उसको खैर मकदम करें. लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के माइनॉरिटी जजमेंट में भी था कि पहली चीज़ तो ये कि सियासत से ऊपर उठकर हमको इस पर सोचना होगा. जिस तरीके से खदशा ये था कि जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि तलाक़ को ख़त्म कर दिया जाएगा, वो खदशा बिल्कुल ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. दूसरी चीज़ ये कि आर्टिकल 25 पर जो सवाल उठ रहे थे वो भी कम अज़ कम ख़त्म हो गया, और ये है कि पर्सनल लॉ कोई भी हो उसकी हिफाजत होगी. अब इसमें दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है. पहली चीज़ तो ये, जैसे जावेद साहब ने कहा कि तमाम समाज के लोग, समाज से मतलब मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इस पर बैठें और एक दूसरे की अच्छी चीज़ों को कबूल किया जा सकता है. जो लोग आज मुस्लिम समाज में, या पर्सनल लॉ बोर्ड जो इसको कह रहा है कि शरीयत की मुदाखलत है, ये शरीयत में नहीं, एक फ़िक़ा के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. ज़ाहिरी तौर से शाबानो केस के बाद क्या औरतों ने मेंटेनेंस लेने से इनकार कर दिया? आज भी एक बड़ी तादाद में मुस्लिम औरतें जो हैं वह शौहर के ख़िलाफ़ कोर्ट जाती हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने मुक़दमात लड़ रही हैं. तो बेहतर ये, इसलिए मेरी तमाम लोगों से इस पर अपील है, ख़ासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, मुस्लिम जमातों से, कि इस पर सियासत के बजाय, और ख़ुद हुकूमत और सियासी जमातों से, कि इस पर सियासत के बजाय हम लोग बातचीत करें. You know, there's a point that I want to make. It's the responsibility now of the likes of Maulana Athar and all other community leaders to be able to educate the community. This is not against the community. If there is something that benefits your daughter, your wife, your sister, your mother, tomorrow it could be my daughter and sister. I mean, how can this be construed even in somebody's wildest imagination as an encroachment or as something that militates against the Muslims? First of all, even people like us who only have a working knowledge of matters of religion, this is anti-Islamic, this is anti-Quran, this goes against the tenets of Quran. 80% of Muslim Islamic countries have banned this. How can this be construed anti-Islam? So, I mean, before asking or demanding of the government or of other communities, I think the responsibility devolves on community leaders within the Muslims, that they should educate the people and bring them on board as far as this case is concerned. Because laws are, I mean, you have 1001 laws. This will be another law. The implementation can only come with people's participation, and therefore the responsibility on the likes of the Maulana to educate people and bring them on board. But sir, if I may, please go on. बिल्कुल. एक चीज़ और भी जिस पे हमको सोचने की ज़रूरत है, जो मॉडर्न निकाहनामा की बात हो रही थी, ये सब जानते हैं कि इस्लाम में शायद एक मुआहदे के तौर पर है, और शायद अभी आपको मालूम होना चाहिए कि बाकायदा मेरी नानी का जो निकाहनामा, जिसको ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में भी उसको कॉपी पेश की, 1933 का निकाहनामा है. मेरी माँ का निकाहनामा, मेरी बहन का निकाहनामा, मेरा अपना निकाहनामा, जिसमें 11 शर्तें होती थी निकाह के अलावा. आप इसको घर वालों से मिलने से नहीं रोकेंगे. मौलाना साहब, अफसोस ये है कि जब the courts had to bring about this corrective rather than people like you, I mean I don't mean you individually, taking the initiative. But जब सब वही मैं कह रहा हूँ, जो आज ये लोग खैर मकदम कर रहे हैं, अगर उन्हीं चीज़ों को जो पुराने समाज में चली आ रही थी, उसमें एक जो क्लॉज था नंबर 7 पे, वो ये था कि आप अपनी बीवी को अकेले में
نہ تو زبانی طور سے نہ تحریری طور سے کوئی ایسی بات کہو گے، وہ اس میں طلاق کا ورڈ نہیں تھا، جو شریعت کے نکاح کو توڑنے والی ہو. جو بھی بات ہوگی آپ پنچوں کے درمیان کہیں گے. یہ اس میں کیا تھا کہ اس میں عورت کو بھی اختیار ہے کہ اگر کبھی اس کو لگتا ہے کہ اب یہ نبھا نہیں ہے تو آپ خلا یا تفویض کے ذریعے اس سے علیحدگی، یہ تمام چیزیں تھیں. لیکن ہمارے لوگوں نے جو آپ نے کہا، ہم نے ان تمام تر چیزوں کو یا تو چھپا کے رکھا یا بتانا نہیں چاہا. تو آج مجھے ضرورت ہے کہ ان سب کو آگے آنا چاہیے. But sir, if I may, one of the things that concerns me is when we say that the onus of reform is on the Muslim community and the leaders of the Muslim community, I'm a little concerned about the fact about who we choose to recognize as leaders of this community. Why is it that we always tend to think that, middle-aged men are the only one who can know about the Quran? The first 2 women to be appointed as qazis was, I think, in Jaipur, and I think it's just started from then onwards. We need to change the idea of who we think represents a Muslim. And it concerns me, sir, that we continue to look to men to sort of reform the women. Even now when we are talking in terms of what we can do for our sisters, for our wives, for our daughters. Why aren't the sisters and wives and the daughters having this conversation? Why aren't they a part of this conversation? Yeah, because to me it sounds a bit patronizing. The fault lies largely with men, less with the women of the community. The women of the community have already shown their mettle. The credit must go to them. They are the ones who've been in the forefront of this battle. They've taken this battle against all odds to the Supreme Court and won it. No thanks to the men of this community. The fault lies with me, therefore I need to apply the correctives. The Muslim women are already applying the correctives. But perhaps it's an argument for greater space to their voices. Certainly. So that they are the ones who lead this movement, then be on the receiving end of it. This is not a question of tokenism. They have to be made equal partners. But because the Muslim men are largely to blame, because the opposition to this progressive verdict of the Supreme Court is coming largely from men, therefore the corrective also has to be applied by the men. Yeah, we'll take a quick break, but we're going to come back and continue the discussion. I think we are here at a very fascinating point, so stay with us. Welcome back to Cover Story. We are here discussing the impact of the ban on the triple talaq. Maulana Sahab, before the break, a very important point was raised कि why are women waiting for men to empower them? खुद जैसे कि इन्होंने कहा कि it was a judgment that actually Muslim women went to the court and it's their victory. Now, why are the opposition still coming from Muslim leaders? Will you accept Muslim women to be your leaders? किसी भी शख्स की जो वसीयत होती है वो सबसे अहम होती है. पैगम्बर अलैहिस्सलाम की जो आखिरी वसीयत है, जो आखिरी लफ्ज़ थे इस दुनिया से जाने से पहले, वो ये थे कि 2 लोगों के लिए अपने आप को तुमको हमेशा उनके हक़ का लिहाज रखना है. एक तुम्हारे मातहत और एक तुम्हारी बीवियाँ. इनके हुकूक, इनके राइट्स को हमेशा समझ के रखना. बदकिस्मती से हमने इन दोनों को कहीं ना कहीं वो करा. अगर आप पूरा गल्फ देखें तो जो कुछ लेबर्स के साथ होता है वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. औरतों के लिए भी मैं 2 बातें बड़े इख्तिसार में कहूँगा. आसाम के एक बहुत बड़े मौलाना थे, पीर साहब भी आप कह सकते हैं. जैसे नूरुर रहमान जो जस्टिस थे वहाँ पे, वो उनके पास गए और उन्होंने जाके कहा कि मैं मेरी बच्ची जो है वो MBBS करना चाहती है, लेकिन मुझको डर है वो बेपर्दा हो जाएगी. पीर साहब ने जो जवाब दिया जावेद भाई, वो उन्होंने कहा कि अगर एक के बेपर्दा होने से बहुत सारी औरतें बापर्दा बन जाएँ तो आपको क्या इख्तियार है. उन्होंने बच्ची को MBBS कराया और आज आसाम की वो यानी जिसको कहते हैं मुमताज़ गायनेकोलॉजिस्ट में से है. जो लोग मुखालफत करते हैं, मैं उन सब से आपके ताल्लुक़ से ये पूछना चाहता हूँ. जावेद साहब देखते हैं, हमको बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, हम विद्या भवन की लाइन में लगकर दाखिला कराने में परेशानी नहीं होती है हमारी, मतलब हर चीज़ में. लेकिन जब मामला आता है अदालत के ज़रिए, मामला सियासत के ज़रिए आता है तो हम सबकी भवें चढ़ जाती हैं. मेरा कहना इस मामले पर जो जावेद साहब ने कहा कि औरतों को बराबर का हक़ है, उनको इल्म हासिल करना कि जब जस्टिस बीबी फातिमा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकती हैं, आधा इस्लाम हज़रत आयशा के ज़रिए हम तक पहुंच सकता है. ईरान में इस वक्त 18 में से 3 जो जजेज़ हैं वो वुमेन जजेज़ हैं. सऊदी अरब में शूरा बना दी गई. तो फिर यहाँ इस मुल्क में रह के हम जितना अपने आप को कहते हैं बहुत आज़ाद ख्याल हैं, सेकुलरिज्म के मायने इफ्तार पार्टी करना नहीं हो सकता है. सही बोला, ये सियासत नहीं होनी चाहिए. और आज हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी. मेरा कहना यह है कि आप पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, यानी फॉरेन डेलीगेशंस में आपको औरतों के साथ बात करते में, उनके साथ
बातचीत करने में, बड़ी बड़ी तकरीरें करने में तो कोई, जब आपकी अपनी कम्युनिटी की औरतों के हुकूक की बात आती है तो आप कंजर्वेटिव बन जाते हैं। One reason perhaps why the established Muslim leadership reacts the way it is, they feel that the state is overpowering, especially currently, and therefore their rights will be encroached upon. So therefore some amount of responsibility also revolves on the powers that be, the messaging, and you have to be able, that's why I said you need to take people together, you need to be able to convince them that look, this is really meant to be a social reform, this is not meant to encroach or disempower you or, you know, push you back into the ghettos. So the messaging has to be right. So only half the work is done, you know, you impart them, but the right... you need to create the right environment, platform, the right space. Environment. Yeah, I also feel that, you know, in a lot of ways this judgment will do us good because they haven't actually resolved the question of, you know, personal law and whether or not it contradicts fundamental rights. It, in fact, if you look at Justice Kurian's judgment, he actually goes into, you know, the theology of it. If it is bad in theology, how is it that it's good in law? So once we become critical of what is, you know, bad within religion, we stop looking at just, you know, absolute equality between communities, but rather instead we look at equality within communities, which I think is a lot more substantive, because we don't need everyone to look the same. We just need everyone to not discriminate against whichever law you want to prescribe to is all right, so long as women have the same rights, right? One thing that, you know, if I could bring to the fore right now, which hasn't been addressed to this judgment, is that when a Muslim woman asks for divorce, it is through, you know, it is through khula, through a lot of other ways in which, in other things that she can use. But, you know, under the Dissolution of Muslim Marriages Act, some of it is still valid, much of it is repealed, we still have to qualify that decision with certain reasons in a way that talaq over 3 months still does not. It entails arbitration, it entails reconciliation, but it does not force you to give reasons. So there is still not absolute equality, but I mean, it's better than what it was before. So we still haven't reached all the way, and I still think the reasons or the grounds for divorce that are under Dissolution of Muslim Marriages Act should apply to men and women alike. So far as that happens, I don't care if it is uniform for other religions or not. Just between Muslim men and women, there is parity. I think that is the end goal of what we want from personal law reform. And this is just the first step. But like Maulana Sahab said, his grandmother had a contract where, you know, there were points that are listed. So why can't that happen with... You know, but talaq-e-tawfiq, for instance, this is when it's, you know, when it's written into a nikah-nama that, you know, we delegate to you this right to divorce, why not have a nikah-nama which is drafted by, you know, by significant men like yourself, like, you know, other women who worked on the cause, and have it uniformly applicable to everyone so that there is no ambiguity about whether or not the delegation has taken place, right? बिल्कुल लास्ट बिल्कुल लतीफ़े, देखिए परेशानी क्या है कि कहीं भी हम औरतों को हुकूक की बात करते हैं, सिर्फ ये जैसे अभी कहा खाप हो, दूसरे चीज़ें हों, या जहाँ पे सरपंच या पंच जो है उनको औरतों के लिए रिजर्वेशन है, वहाँ पे कोई भी मर्द हो वो क्या कुछ करते हैं हम सब जानते हैं। यूपी में मैं एक जगह गया जहाँ वो पर्दे के साथ एक औरत चुनाव लड़ रही थी, मतलब उसके शौहर का नहीं था, वो औरत के लिए रिजर्व सीट थी। तो मैंने उनसे पूछा, कहते हैं साहब ये शरीयत में गुनाह है कि मैं चेहरा दिखा के इनको चुनाव लड़ाऊँ। बाद में कुछ दिन बाद वही साहब जावेद भाई मुझको एक प्रॉपर्टी यानी रजिस्ट्रार ऑफिस में मिल गए जहां वो दोनों फोटो खिंचा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि उस जगह पे आपके लिए चीज़ ममनू है, यहाँ ये चीज़ आपके लिए जायज़ बन गई है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि आप समाज में, और एक आखिरी चीज़ मुझको जो ये गलत फहमी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई इतनी आसान तर चीज़ नहीं है कि वो किसी भी पर्सनल लॉ को ख़त्म कर देगी। सो जो जस्टिस खैर ने कहा, जस्टिस नज़ीर ने कहा कि तमाम पर्सनल लॉज की हमको हिफाजत करनी पड़ेगी, हमको ट्राइबल्स को भी देखना पड़ेगा, हर चीज़ को देख। तो मैं समझता हूँ कि गलत फहमियों से आगे आके खाली बयानबाजी के बजाय जावेद साहब हैं, दूसरे लोग हैं, बैठ के सोचा जाए कि हम किस तरीके से कमज़ोर तबके को एम्पावरमेंट कर सकते हैं। और उसके लिए न्यूज़ एक्स के ज़रिए मैं वज़ीर आज़म से एक ही दरख्वास्त करता हूँ, उनका आज इकबाल है, राज्यसभा के अंदर यूपीए के ज़माने में वुमेन जो रिजर्वेशन बिल था वो पास हो चुका है, कम अज़ कम इस पार्लियामेंट के अंदर वो 33% रिजर्वेशन औरतों को दी। मैं तो यहाँ तक एक बात आगे बढ़ के कह रहा हूँ कि सियादत नहीं करता, आप उसमें मुसलमान या दलितों की भी रिजर्वेशन मत रखिए, आप जनरल औरतों को रिजर्वेशन दे दीजिए ताकि तमाम हिंदुस्तान की औरतों की जो है वो इकबाल बुलंद हो। Very positive, sir. And as you can see, at least this judgment has sparked off a progressive debate in the community, in television channels, and we are hoping that this will actually go further and maybe have a uniform civil code that appeals to everybody, that, you know, takes on to all the personal laws into account and has something that satisfies everyone. But that's it for now. Thank you for watching this show. We'll see you again same time next week.